हेलो एवरीवन, आई विश यू वेरी गुड इवनिंग। आई होप आपका जो टर्म टू का प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छे से चल रहा होगा सिंस यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द सिलेबस। सो नाउ दीज सेशंस आर डिजाइंड सो दैट कि आपको पता चले कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में लिखना कैसे है, क्योंकि टर्म वन में हमारे एमसीक्यूज थे बट इन टर्म टू वी हैव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सो फॉर दिस सेशन हम लोग ग्रीन स्किल्स देखने वाले हैं फॉर AI 417 एंड IT 402। So before we start, please let me know if my voice is audible to everyone. Just a quick introduction. My name is Aakash Singh. I teach computer science, artificial intelligence, and information technology on this channel. Now, I have a degree in artificial intelligence from IIT Hyderabad, and I also have a degree in metallurgy from IIT Bombay. If at any point of time अगर आपको doubt आ रहा है किसी भी चीज़ में, किसी भी सब्जेक्ट में, what you can do is you can directly connect with me on Unacademy community. Now, Unacademy community पे मैं notes post करता हूँ आप लोगों के लिए, where I have posted notes for IT 402, computer applications and AI as well. Now आप कैसे follow कर सकते हो community is just download the Unacademy app. You can go to my profile. Over there you will get to see this box. अगर आप इस पे क्लिक करोगे आपको पूरी community दिख जाएगी where I've shared the notes, where I've showed the shared the schedule. Hello Abhi, welcome Riddhi. Hello Rocking Man. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन ज्वाइन माई कम्युनिटी, जहाँ पर मैं नोट्स शेयर करता हूँ। अगर आपको कभी भी पीडीएफ चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए, यू कैन गो देयर एंड चेक दैट आउट। ऑल राइट, सो जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो देर इज अनदर वे। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है या फिर अगर आपको स्केड्यूल पता करना है, यू नीड अपडेट्स और मे बी यू जस्ट हैव सम डाउट्स, what you can do is for computer applications IT 402 as well as AI 417, this is the link for my telegram channel. अगर आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, what you can do is you can go to Chrome, Mozilla अगर आप Mozilla यूज करते हो, या मे बी Edge. तो these are all web browsers. अगर आप ये जो URL है इनमें से किसी भी वेब ब्राउजर में डालोगे, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू माई ग्रुप, यू विल बी एबल टू ज्वाइन देयर, जहाँ पर आपको नोट्स, शेड्यूल और डाउट्स तीनों ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ओके, all right, so I can see a couple of people in the chat kind of spamming, but anyways, let's go ahead and see the 1 mark questions. Now please remember, as you can see in the title, the topic is green skills. ठीक है, अगर हम लोग IT 402 की बात करें या फिर AI 417 की, दिस टॉपिक इज प्रोबेबली द इजीएस्ट टॉपिक इन बोथ ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, राइट। इसके बाद हम लोग ऑन्टरप्रेन्योरियल स्किल्स भी करेंगे, बट फॉर दिस टॉपिक आई थिंक दिस सेशन विल बी इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपको क्वेश्चंस कैसे लिखने चाहिए। तो हम लोग 1 mark क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। दे वोंट बी सब्जेक्टिव टाइप, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप देखेंगे, क्योंकि योर टर्म टू एग्जाम्स आर बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लस सब्जेक्टिव, ठीक है। All right, so let's try to answer a few MCQs, and if you know the answer you can write it in the chat box. Sustainable forest management were developed in Europe during the centuries. Now अभी आपको पूछा जा रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये बेसिकली कौन सी सेंचुरी में इन्वेंट हुआ था। नाउ since let's see if you are able to answer this. The correct answer would be 17th and 18th century. Now if you do not know this answer, how you can remember this is, so now 19th century में you definitely know कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट हुआ था, बट उसके पहले जो ये डिस्कवरी हुई थी, जब उन्होंने डिसाइड किया था ये करना, दैट वाज जस्ट बिफोर द 19th century. सो यू कैन मार्क 17th and 18th century, ठीक है। रॉकिंग मैन, यस, एनएलपी एंड इवैल्यूएशंस के क्वेश्चंस हो गए। हेलो कनिष्का, ओके। सेकंड क्वेश्चन, डू यू अग्री विद द व्यू दैट greater economic activity will certainly lead to greater damage to environment? Now what the question is asking you is कि अगर किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो will it actually lead to degradation of the environment? The options are yes, no, not certainly or cannot be said. So now let me tell you, अगर किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, so that means more roads will be created, more industries will be created, your
consumption of natural resources will also increase, right? अगर ये सब चीजें होंगी तो it will certainly lead to greater damage to the environment. Now ये क्वेश्चन जरूर ऑब्जेक्टिव लगते होंगे एमसीक्यू टाइप्स, but when you have to solve them you actually have to list down all the reasons कि why a question is right or wrong. Okay, so third one, sustainable development is necessary because it helps to promote and conserve the environment. Yes, it does. It makes people aware for the effective use of natural resources. Sorry for the wrong language, but I hope you understand. So even this is right. It aims at achieving the goal of economic and social development. Okay, so ये तीनों ही options correct हैं. So that means all of the above is the correct answer. मीमर्स इज आस्किंग कल आपका एआई का प्री बोर्ड है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए. So for your pre-board, I think there are only two topics, Meemer. NLP as well as evaluation. अगर आपको इसके ऊपर नोट्स चाहिए या फिर लेक्चर्स चाहिए, आपको वो दोनों मिल जाएंगे इस चैनल पे. जस्ट यू हैव टू सर्च फॉर इट. ठीक है. All right. Question number 4. Which of these is non-renewable source of energy? I wouldn't even ask you. I think most of us know directly. Coal is the right answer. It is non-renewable. क्योंकि coal एक बार खत्म हुआ तो you will not be able to regenerate it. However, wind, solar, hydro power can be regenerated. Okay. So Urvashi, I won't be able to help you in marketing, but for part A, this is the correct session. The concept of sustainable development is easy and practicable to subjective and complex. Basically difficult है, उसको बहुत चीज़ें याद करनी पड़ती हैं. And utopian idea, मतलब almost impossible, जो achieve करना बहुत ही difficult है. So sustainable development is always easy and practicable. Now I have taken these questions from Arihant. Right, in your Arihanth book it is mentioned that this option is correct, so please ignore that. This is not the right answer. Most of these books do not have the correct answer, so before learning any answer please refer to your theory notes. That would be beneficial for you. Okay. All right, question number 6. If sustainable development is neglected, then we shall have a safe and secure environment. So that is right. Oh, this is not actually right. This is wrong. It will destroy ecology and environment, endanagering the survival of future generations. So this is actually right. Mankind will continue to live and prosper. Even this is wrong. क्योंकि sustainable development किस पे focus करता है? Present use of resources as well as future use. अगर हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं किया, इट विल डेफिनेटली डिस्ट्रॉय द इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इन द प्रेजेंट एंड ऑल्सो hamper the way our future generations are living. So B is the correct answer. Levy is saying green economy. Yes, you can say green economy. It has a different context altogether. All right. Why is it important to adopt sustainable development to save ecology and environment, to save mankind? Now, since हम लोग green skills पढ़ रहे हैं, these both would be the right answer. So C. All right. So if you have doubts at any point of time, you can use the chat box to let me know that आपको किसी चीज़ में difficulty आ रही है. Since you are studying SST, social science आप पढ़ रहे हो, you will be able to answer most of these questions very easily. तो हम लोग जब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे जंप करेंगे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको देखना है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपको लिखने चाहिए. ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 9. वी नीड टू रियलाइज आवर मॉरल एंड एथिकल ऑब्लिगेशंस टू मदर अर्थ. ऑब्वियसली अर्थ ने हमको इतना सब कुछ दिया है, एज वेल एज आवर फ्यूचर जनरेशंस. वी कैन नॉट फिनिश ऑल द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक कोल हम लोगों ने खत्म कर दिया. व्हाट विल द फ्यूचर जनरेशन डू? सो सी इज द राइट आंसर. Sujit, there is already a playlist for computers on this channel. अगर आप playlist के section में जाओगे channel पे, you will be able to find that. Which of the following is a major problem of sustainable development? हम लोग अब problem की बात कर रहे हैं sustainable development में.
turning the concept of sustainability into framing policies and rules, striking a balance between development and its consequent damage to the environment. So if you are unable to understand that in simple terms, जब हम लोग सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, वी ऑलवेज हैव टू पास सम लॉज या फिर कुछ रूल्स क्रिएट करने होते हैं. तो कभी कभी ये रूल्स डिपिक्ट नहीं करते कि हम लोग को सस्टेनेबिलिटी कैसे करनी है. सो दिस इज राइट. देयर शुड ऑलवेज बी अ बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट as well as the environment, right? So even this is correct. So C option would be the right one. I hope the explanations are satisfactory. All right. Dash jobs contribute to preserving or restoring the natural environment. Now, this question was discussed in the special class. At that point of time, I said कि green collared would be the right answer. And in some NCERT book, it is also mentioned कि green jobs होता है. So after doing some research, the correct answer comes out to be that both A and B are actually right. I think Riddhi asked this question in the special class. तो सुजीत फॉर 402 एज वेल एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है ऑन दिस चैनल जिसका नाम है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी 402. ऑलराइट. व्हाट इज ग्रीन इकोनॉमी? अ ग्रीन इकोनॉमी इज द वन दैट प्रमोट्स economic development while making sure that the environment is protected. Yes, that is a green economy is the one that promotes social development. No, this doesn't seem right. A green economy is the one that promotes education among children. Nope. So the correct answer would be A. It promotes economic development while taking care of the environment. Hello Mansi, how is it going? I hope आपका preparation अच्छा चल रहा है term 2 के लिए. Achievement of sustainable development requires the integration of which component at all levels. So basically the question is asking, जब हम लोग sustainable development के बारे में बात करते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं. इकोलॉजिकल रखनी पड़ती है कि आपकी इकोलॉजी पे कितना फ़र्क पड़ रहा है. इकोनॉमी ग्रीन होनी चाहिए. आपका सोशल में हम लोगों ने क्या देखा था? इक्वालिटी, एजुकेशन. आई होप यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में मेंशन किया गया है. ठीक है. सो ऑल ऑफ दीज वुड बी द राइट आंसर. ठीक है. यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट set up development goals called as. So now it was started in 2015. Basically 2015 में डिस्कशन हुआ था कि by the end of 2030 आपके सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो 17 है नंबर है वो कंप्लीट होने चाहिए. सो यू कैन से दैट द आंसर इज एजेंडा 2030. इति जैन सर आप कितने क्वेश्चंस करवाएंगे? प्रोबेबली इति MCQs ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे ऑलमोस्ट 15 हो गए हैं अभी. एंड सब्जेक्टिव में ओनली 2 मार्क्स क्वेश्चंस. वी विल बी डिस्कसिंग अराउंड 10 और 12 ऑफ देम. ठीक है. 1 और वीडियो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स पर बना दीजिए. ऑल राइट. क्विक मैथमेटिक्स. आई विल quickly do a revision for you for the same. All right. All right, just a quick check if you guys are able to hear my voice, if you are able to see this mark on the screen. हम लोग quickly discuss करेंगे the 2 mark questions. ठीक है. You can mark in the chat as thumbs up or maybe yes. Is my voice audible? All right. So let's look at a few subjective questions. नाउ ऐसा हो सकता है आपने जो क्वेश्चंस है पहले कभी सॉल्व किए होंगे 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड में. बट फॉर ग्रीन स्किल्स आई थिंक यू शुड हैव अ लुक एट दीज क्वेश्चंस फर्स्ट. क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया एंड यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट. क्योंकि ग्रीन स्किल्स इज अ फेयरली ईजी टॉपिक. ठीक है. सो लुकिंग एट द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्प टू मैनेज क्लाइमेट चेंज? ना हम लोगों को क्लाइमेट चेंज के बारे में देखना है कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्प कर सकता है. सो बेसिकली हम लोगों को कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ेंगी, लाइक रिड्यूसिंग द यूज ऑफ फॉसिल बेस्ड सोर्सेज. व्हाई? नाउ द एग्जांपल्स आर कोल, natural gas, petrol, etc.
राइट? वाई शुड वी रिड्यूस इट? क्योंकि इनसे क्या होता है, इनसे ग्लोबल वार्मिंग होती है एंड क्लाइमेट चेंज डायरेक्टली होता है, बिकॉज दे ऑलवेज एमिट द ग्रीन हाउस गैसेज. ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी होती हैं? CO2, आपका मीथेन, एक्सेट्रा. ठीक है, सो आपको क्या लिख देना कि यू हैव टू रिड्यूस द फॉसिल बेस्ड सोर्सेज ऑफ फ्यूल which directly contribute to greenhouse gases. Alright, I hope you have seen this before. It's nothing like या first time देख रहे होंगे. Write any two challenges to sustainable development. Now, since we are talking about sustainable development, ऐसा तो नहीं है कि बहुत easily आप हर जगह follow कर सकते हो. There will always be challenges or difficulties. Now, challenges can be rise in population level. आप कितना भी plan out कर लो, if your population is increasing at a very fast pace, it becomes difficult. ठीक है? And the second is poor management of natural resources. As we discuss in sustainable management कि present का जो consumption है वो देखना पड़ेगा, as well as future के लिए save भी करना पड़ेगा. ठीक है? So these are the two things which you can write if you get a question on two challenges or maybe multiple challenges. Alright, looking at the next question. Which type of industries should be relocated outside the cities? Basically आपको पूछ रहे हैं कि कौन सी इंडस्ट्रीज सिटीज में नहीं होनी चाहिए. ऑब्वियस आंसर इज कि जो भी इंडस्ट्री पोल्यूशन करती है, जो भी पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं, दैट शुड नॉट बी इनसाइड द सिटीज, बिकॉज जनरली व्हाट हैपेंस इज पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज अफेक्ट द सॉइल, एयर as well as the water. And what if all these contaminated things are consumed by humans as well as animals, right? So it will always lead to the depletion of their health issues हो सकते हैं. That is the reason these kind of industries should not be near the cities. Okay, so I hope this was understandable, nothing too difficult. Discuss the role of sustainable development to provide financial stability. Now ज़रूरी नहीं है कि sustainable development से आप सिर्फ environment के लिए ही करते हो. You also want to develop financial stability. Economy भी अच्छी होनी चाहिए. सर इंडस्ट्रीज तो सारी ही पोल्यूटिंग होती है, तो कितनी इंडस्ट्रीज बनाएंगे बाहर? So Riddhi, not all of the industries are polluting. If I talk about waste recycling industry और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, तो इनसे जनरली कुछ पोल्यूशन नहीं होता. ठीक है, ये एक्चुअली ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं एक्चुअली पोल्यूटेड थिंग्स लेती हैं सो दैट दे कैन गिव यू क्लीन प्रोडक्ट्स. ठीक है, सो नॉट ऑल इंडस्ट्रीज आर पोल्यूटिंग. ऑलराइट, as you were talking about कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमी में भी हेल्प करना चाहिए, तो किसी भी कंट्री को अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए तो उनको क्या करना चाहिए? दे शुड यूज मोर रिन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक विंड, हाइड्रो, सोलर. तो इससे क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर डिपेंडेंसी ऑन कोल, नेचुरल गैस विल रिड्यूस. आप ज़्यादा कम खर्चा करोगे उन चीज़ों पे. लेटर ऑन दे विल ऑल्सो क्रिएट सस्टेनेबल जॉब्स. जो विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर पावर, ये सब जो इंडस्ट्रीज हैं, ये सब जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, दे ऑल्सो क्रिएट जॉब्स विच आर सस्टेनेबल इन नेचर. ठीक है, सो यू कैन मेंशन दीज टू थिंग्स इन योर आंसर स्क्रिप्ट. हेलो प्रथम. So let's look at the next question now. All right, so just before we move on to the next question, अगर आपको ये सारे questions का PDF चाहिए, you can find that on my Unacademy community. I have explained the process how you can join the community. Hello Hardik, how is it going? Great to see you. All right, so we are discussing actually the subjective questions, कौन से आपके green skills में beneficial होंगे पढ़ने के लिए. Now, what are the forms of sustainable agriculture? No, agriculture से related sustainability की बात करेंगे तो obviously every time you have a common answer. ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है. ये जो चीज़ है it will be common in most of the questions. ये efficient use of resources without damaging the environment. ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ examples learn करने हैं, examples याद करने हैं, जैसे crop rotation. राइट, कुछ crops होते हैं जो बहुत intensive होते हैं, soil के सब nutrients खींच लेते हैं. So next time when you grow crops, you don't grow crops which take the nutrition.
ऑर्गेनिक फार्मिंग आप कर सकते हो, बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो पेस्टिसाइड्स। ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। So if you guys remember, there are 17 sustainable development goals. Now I have been asked multiple times कि ये सब 17 के 17 learn करने पड़ेंगे. The kind of question which you will get are right 4 or 5 or maybe 6, उससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा. So it is a good practice if you know all of them, but आपको सब learn करने की ज़रूरत नहीं है. So let's talk about the 4 development goals. Affordable and sustainable energy, sustainable economic growth, सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन, बेसिकली जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो एनवायरनमेंट पे ज़्यादा अफेक्ट ना करें, एंड रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। ठीक है, एक एनर्जी से रिलेटेड है, एक इकोनॉमी से रिलेटेड है, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड है, एंड एक सोशल कंडीशन से रिलेटेड है। ऑलराइट, गुड इवनिंग प्रिंसेस। So if this is understood, can we go ahead and see the next question now? So आपको जनरली ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि हाउ इज दिस इंडस्ट्री बीइंग अफेक्टेड, हाउ यू कैन डू दिस। आप या तो सॉइल कैसे अच्छा करोगे, वाटर कैसे अच्छा करोगे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फिशरीज, फिशिंग इंडस्ट्री। सो हाउ यू कैन हेल्प द फिशिंग इंडस्ट्री टू डेवलप सस्टेनेबली। ठीक है, सो देर आर 3 points which you have to notice. First is creating awareness about ओवर फिशिंग, कि आपको ज़्यादा फिशिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस, बेसिकली यू हैव टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ फिश यू कैच एंड प्रोवाइड इनफ टाइम कि जो फिश है वो दे कैन ऑल्सो ब्रीड एंड मल्टीप्लाई। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर फिशिंग इन जनवरी, इफ यू आर फिशिंग इन फेब्रवरी, तो आपको थोड़ा ब्रेक देना पड़ेगा प्रॉब्ली फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, सो दैट यू कैन अगेन रिज्यूम इन जून और जुलाई। ठीक है, so that the population comes back to its normal form. And the last part is never buy endangered fish. So these fish are, वो जनरली पॉपुलेशन उनका ज़्यादा नहीं होता है, अगर हम लोग उनको फिश करते रहेंगे कंटिन्यूसली, उनका जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम हो गया एंड दे कैन गो एक्सटिंक्ट. सो नेवर बाय endangered fish. Pretty common knowledge type questions. I hope you are able to solve them during your examinations as well. You can use this video as a reference. अगर आपको ज़्यादा ग्रीन स्किल्स पढ़ना नहीं है, this video will serve as a very good reference to you guys. Why there is a need for sustainable development? Give reasons. Now, since we have already discussed so much about sustainable development, I think you will be able to answer this. Maximum benefit without wastage. As I am continuously talking about, प्रेजेंट में कोई वेस्टेज नहीं होना चाहिए, सो दैट यू आर एबल टू सेव फॉर द फ्यूचर जनरेशंस. ऑलवेज रिमेंबर दीज 2 टर्म्स, प्रेजेंट में कैसा होना चाहिए एंड फ्यूचर में कैसा होना चाहिए. सस्टेनेबल डेवलपमेंट से एक और फायदा क्या होता है, जो लोगों का नॉलेज है और स्किल है और जो एटीट्यूड है, इट एक्चुअली इम्प्रूव्स अ लॉट. राइट, अगर आप ग्रीन प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तो लोगों को स्किल आना चाहिए. अगर आप एजुकेशन प्रोवाइड करोगे, अगर आप इक्वालिटी प्रोवाइड करोगे, तो एटीट्यूड एज वेल एज नॉलेज, everything will increase. Now the most important, development without destroying the environment. ठीक है, फर्स्ट क्या था, वेस्टेज के बारे में हम लोगों ने बात की, फिर स्किल कैसे इंप्रूव होता है लोगों का, एंड लास्ट इज वी आर इंप्रूविंग, वी आर डेवलपिंग विदाउट अफेक्टिंग द एनवायरमेंट. ठीक है, सो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, प्लीज लेट मी नो इन द चैट इफ यू हैव हैड एनी डाउट्स. ठीक है, now this question seems a bit long, but let's understand कि क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है. हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रीच कैसे कर सकते हैं, what are the solutions, what can you do about sustainable development. now very basic things कि डिफॉरेस्टेशन नहीं होना चाहिए, अफॉरेस्टेशन करो, वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, दीज आर फेयरली बेसिक थिंग्स, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एंड हम लोगों ने देखा था लेस केमिकल फर्टिलाइजर्स. ठीक है, तो समवन इज आस्किंग अ डाउट फ्रॉम पाइथन. ऑलराइट, दिस इज आस्किंग पाइथन में स्पेस देने के लिए अंडरस्कोर यूज करते हैं तो सर
Riddhi, I'll get back to your doubt after discussing these questions. Okay. Varun is asking, sir, आप कौन से IIT से हो? So Varun, I have my degree from IIT Bombay as well as IIT Hyderabad. Welcome Kadila Sports. That's a unique name. What's your optional subject? Okay, so I think this might be the last subjective question, but the question is asking you, total world consumption of cereals will almost double by 2030. So जितना भी आप फूड प्रोड्यूस कर रहे हो, क्या होगा, उसका जो कंजम्पशन है वो एक्चुअली डबल होने वाला है. तो हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे मेंटेन कर सकते हैं? तो नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज कि हम लोगों को प्रोड्यूस बढ़ाना है, हम लोगों को प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है किसी भी लैंड की विदाउट इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन. तो दिस वुड बी द राइट आंसर, रेजिंग यील्ड्स ऑन एग्जिस्टिंग क्रॉप लैंड. आपके पास ऑलरेडी जो फार्म्स प्रेजेंट है उस पर ही कुछ टेक्निक्स लगा के यू हैव टू इम्प्रूव अपॉन द प्रोडक्शन. ठीक है. हेलो भावेश. ओके, सो दैट्स योर रियल नेम. Okay, so with this, we have actually finished all the questions that can be asked from your green skills, जो कि objective questions हैं, as well as आपके जो 2 marks subjective questions हैं. Now, if you need the PDF, what you guys can do is, you can connect with me on my Unacademy community. मैं वहाँ पर क्या करता हूँ, ये जब ये सारे जो PDFs हैं, I'll be sharing it there. You can find these questions on my Unacademy community. The way to join that is, Unacademy app download karo. It is available on Android as well as iOS. You can visit my profile. You can actually follow me. If not, you can directly go to the educator community जहाँ पर आपको follow का option आ जाएगा. And then you will be able to look at all the notes and the lectures which I have already shared there. Kadila is saying IIT Bombay Lakeside. So do you stay inside IIT Bombay or in Powai? Vibhu, sir, tomorrow is my AI exam. Can you tell some important questions? So Vibhu, on this channel, you will find a couple of questions जो मैंने NLP से किए हैं. NLP के मैंने questions, subjective questions बहुत most important already solve करवा के रखे हैं, as well as evaluation. What you have to do is, you can find it on the channel. If you are unable to find it, what you can do is, there is a playlist of computer applications. तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस की एक प्लेलिस्ट है, उसमें ही आपको कोड 417 के सेशंस भी मिल जाएंगे. सो यू कैन गो देयर एंड हैव अ लुक एट देम. प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स. ऑल राइट, Kadila Sports is living inside IIT Bombay. May I ask you how? इति जैन, सर आप अरिहंत का सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करवाओ. Yes, Iti, we will also practice the sample papers, but before we do the sample papers, what we are doing is, हम लोग हर दिन subjective as well as objective questions का एक session लेंगे जहाँ पर हम लोग सब questions discuss करेंगे. Next week, we will start with our sample paper series, okay? So Vibhu, if you understood what I meant to say with this, please put a thumbs up. And Iti, if your doubts were solved, please put a thumbs up so that I understand. Yes, and Riddhi had a doubt. Riddhi's doubt was, can you repeat your doubt, Riddhi? It was related to Python, right? All right. So I was staying in hostel to Kadila. Great to hear that. Some fellow from IIT Bombay. Okay. JEE के लिए कुछ tips दे दीजिए. Varun, since you're in the 10th standard right now. All right. Some JEE tips. Now, these are not hard and fast tips कि आप ये follow करोगे तो you will get into IIT. But there are some things common between all the JEE aspirants and everyone who's able to crack into IITs. Okay. तो जब आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाई करते हो, डोंट जस्ट ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ ग्रेविटेशन वर्क्स, हाउ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वर्क्स. मैथमेटिक्स में जितने भी थ्योरम्स है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड रट्टा नहीं करना. एंड फॉर योर अदर टिप्स, आई कुड से
probably do not study for longer time, but always be 100% focused when you study. तो व्हाट आई मीन बाय दैट इज, अगर आपकी एफिशिएंसी जो है, जितना आप पढ़ के लर्न कर पा रहे हो, अगर दैट इज ओनली 70%, आपको शायद कोई भी चीज़ कंप्लीट करने में 5 से 6 घंटे लग जाएंगे, कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर कंप्लीट करने में. बट अगर आपकी एफिशिएंसी एट दैट सेम पॉइंट ऑफ टाइम 99% है, यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन जस्ट 2 to 3 hours. तो बेसिकली इट्स नॉट दैट कि आप ज़्यादा टाइम तक पढ़ाई करो, इट इज़ दैट कि आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो एफिशिएंसी है, बहुत ज़्यादा हाई हो. Okay, so quick mathematics. No, I'm not an entrepreneur, but I have some experience in entrepreneurship. Okay, so Riddhi's doubt was कि इति जैन, so अब अगर आपका आईटी का प्री बोर्ड है, all the content is already available on this channel. I hope everything is helpful for you. If not, you can connect with me on Unacademy community. All right, let's look at Riddhi's doubt. Python में space देने के लिए underscore. So Riddhi, underscore was just an example. Now if I just want to write marks 1, ठीक है, if you remember we were calculating the average of your marks in term 1, तो हम लोग variables create कर रहे थे, right? marks 1, marks 2, marks 3. You can also write something like this, marks 1. You can also write something like this, marks @1. But however in general, so that it is very easy to understand, read करने में आसानी हो, इसलिए हम लोग हमेशा underscore यूज करते हैं. बट इट इज़ नॉट अ नेसेसिटी कि आपको यूज़ करना है, बट इट इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस. वेलकम शाहजेब, आफ्टर लॉन्ग टाइम AI417. साहिल, कैन वी यूज कैमल केस? आई डोंट अंडरस्टैंड साहिल, व्हाट इज कैमल केस? Urvi, I do not know a lot about animation. If you have any other doubts related to artificial intelligence, related to information technology, related to computer applications, related to coding, अगर इनमें से किसी में भी आपको डाउट है, यू कैन गो अहेड एंड आस्क मी इन द चैट. ठीक है, so now you can and you will be able to download the PDFs from my Unacademy community for all the 3 subjects. I'll be sharing all the content over there. Yes, oh, all right. Yes, you can also use camel case. Sahil, that's a very good example. Great example, Sahil. Now what Sahil is saying कि हम लोग विदाउट स्पेस हम लोग ऐसा भी यूज कर सकते हैं, जैसे साहिल एंड कुमार. तो ना व्हाट कैमल केस मीन्स कि हम लोग कैपिटल्स यूज कर रहे हैं जहां पर एक्चुअली कैपिटल्स यूज होते हैं. बाय म्यूजिक डेस्क. ऑल राइट, सो नाउ if you're enjoying, if you're understanding, if YouTube sessions are helping you a lot, अगर आपको ये चैनल से बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन हो रही है, what I would suggest is you can also try out the subscription on the Unacademy platform. Now why I'm talking about subscription is because YouTube is a very good place to study, but there are even better things which you can expect from a learning platform. क्या होता है कि अगर आप क्लास 9th में हो, राइट, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आपको कौन से बैच के लिए एनरोल करना है, व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स. अगर आपको रिविजन करना है, अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, या फिर आपको क्रैश कोर्स करना है, नॉट ओनली फॉर क्लास 9 बट ऑल्सो फॉर योर क्लास 10th. यू गेट मल्टीपल ऑप्शंस कि अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो और फिर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, आपका जो वीकली स्केड्यूल होता है दैट इज ऑलरेडी सेट अप. सो यू डोंट हैव टू सर्च फॉर वीडियोज ऑन यूट्यूब, यू हैव टू वेट फॉर लेक्चर्स. आपके जितने भी लेक्चर्स होते हैं यहाँ पर सब स्केड्यूल के अकॉर्डिंग होता है. सोनम is asking, can you please tell a bit about protocols? So Sonam, what you need to understand is protocol का मतलब बेसिक क्या होता है, रूल्स. जैसे हम लोग ह्यूमंस एक दूसरे से बात करते हैं, हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, ग्रामर एक रूल होता है, ठीक है. वैसे ही जब 2 डिवाइसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है, हो सकता है कि सिर्फ फाइल ट्रांसफर हो रहा हो सकता है कि सिर्फ टेक्स्ट ट्रांसफर हो रहा हो सकता है कि वेब पेजेस ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है. हर एक चीज़ के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स लगते हैं. तो जैसे वेब पेजेस के लिए हम लोग ब्राउज़र यूज़ करते हैं, उसमें जो प्रोटोकॉल है दैट इज़ HTTPS, ठीक है. हम लोग
फाइल ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें प्रोटोकॉल होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. So this is just a short introduction about protocols. If you want to understand more, there is a playlist on computer applications on this channel. अगर आप playlist section में जाओगे, you will be able to see that. ठीक है? All right, Shahzeeb. Okay, so now since everyone is in the 10th standard or maybe the 9th standard, आप सोच रहे होंगे कि 11th में आपको क्या लेना चाहिए, साइंस या मे बी कॉमर्स और मे बी मेडिकल. नाउ इफ़ यू हैव दीज काइंड ऑफ डाउट्स, या फिर अगर आपको अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना है, आपको थोड़े लेटेस्ट ऑफर्स के बारे में जानकारी लेनी है, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन get in touch with a counselor who will be able to help you with all these things. You just have to dial on this number. ठीक है, ये सिंपल सा नंबर है, आपको सिर्फ उस पर डायल करना है so that all of your doubts, all of your confusions are solved in a swift manner. You're welcome, Riddhi. All right, so now as I was talking about Unacademy subscription, जैसे मैंने बोला YouTube is a good place to study, but एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म से आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें और मिलनी चाहिए, जैसे पर्सनल गाइडेंस, मेंटरशिप, आपके जो टेस्ट देते हो आप उसका एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल एज वेल एज नोट्स. ठीक है, सो दैट इज द रीजन अनअकैडमी हैज टू काइंड्स ऑफ सब्सक्रिप्शंस. एक है नॉर्मल सब्सक्रिप्शन जहाँ पर आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, लाइव क्लासेस होंगी, टेस्ट्स होंगे एंड अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज. whereas there is one a premium subscription if you need more features out of Unacademy, जहाँ पर आपको एक मेंटोर दिया जाता है who helps and guides you कि टर्म 2 के लिए कैसे पढ़ाई की जाए, टर्म 11 में आपको कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट all these options are available only on Iconic. Prajwal is asking how to become ethical hacker. So अगर आपको hacker बनना है, these are the things you need to learn. Python, networking, Linux, etc. So Linux is an operating system. जैसे Windows और Mac OS होता है, वैसे Linux आपको ये सब चीज़ें सीखनी पड़ती हैं. नाउ जनरली जितने भी हैकर्स होते हैं दे आर जनरली सेल्फ टॉट. बेसिकली वो यूट्यूब की वीडियोस देख के या फिर खुद से ही प्रैक्टिस करके दे बिकम हैकर्स. हाउएवर अगर आपको एक कोर्स करना है हैकिंग पे, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट बाय प्रैक्टिसिंग योरसेल्फ. यू कैन ऑप्ट फॉर एनी डिग्री इन कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिकल. बेसिकली आपको क्या करना है, आपको कोडिंग काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी. कोडिंग में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए इफ़ यू वांट टू बिकम एन एथिकल हैकर. Sponsor from Tata Groups regarding my startup, should I accept or refuse and stick to internship offer? So Hardik, what I would like to say is, since you are getting an offer for your startup, right, and you have an offer for internship as well, so since you're still in the 10th standard, I think आपके पास probably 10 years पड़े हैं to go for internships. Internships are very easy to get into. अगर आप 11th 12th या कॉलेज में भी स्टार्ट करोगे आपको इंटर्नशिप्स मिल सकती हैं. बट टॉकिंग अबाउट द ऑफर फ्रॉम टाटा ग्रुप, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जा रहे हो, दीज थिंग्स कम वंस इन अ वाइल. ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर दिस. ठीक है, आप ये ट्राई आउट कर सकते हो सिंस इंटर्नशिप्स आपको काफ़ी मिलने वाली है आगे जाके. साहिल इज सेइंग लिनक्स इज माई फेवरेट. So Sahil, I think you might be knowing about Kali Linux, right? Prajwal is saying I already learned Python a little bit. If you already know Python a little bit, what you can do is you can practice. You can practice a few questions which are available. ठीक है, what I would suggest, Prajwal, there is this site known as Hacker Rank. ठीक है, आप इस पे enroll करो and Python के problem start करना try करो. I hope this is useful to you. All right. So now if you're planning to take a subscription, अगर आपको 10th standard में benefits लेना है, if you want to perform well in your term 2, what you can do is you can use the code ASK01. So this is my personal code which stands for ask any number of times, right? So if you're taking a 3-month subscription, आपको 1 month का subscription completely free of cost दिया जाएगा. However, अगर आपको 12 महीने या उससे ज़्यादा का subscription लेना है, आपको 2 months completely free दिए जाएंगे. टाटा रिद्धि. Right, so plus subscription का pricing looks like this. Again, as I said, ये जो code है that is a magical code because इससे आपको 10% discount मिलता है. Now what is the benefit of discount? If you see, now अगर हम लोग 3 महीने का subscription ले रहे हैं तो आपको 1 महीना free तो मिल ही रहा है,
but even this thing is converted into 2250, right? But अगर आपको थोड़ा और सस्ता चाहिए, if you want it to or want the price to reduce, what you can do is you can opt for a longer duration, right? जहाँ पर आपको 14 months मिलेंगे at the price of 12 months. Now again, using the 10% discount, it converts into 1125, and as you increase the duration of the subscription, अगर आप देखोगे प्राइसिंग भी बहुत कम हो जाता है. Prakriti, all right, great to see you, Prakriti. I'm glad that the sessions were helpful. You could share the AI sample AI question paper with me. I would be glad to take it on next session. Danny is asking, should I get a Red Hat certification for ethical hacking? Is it for school? So Danny, in school, what I would suggest you is only focus on learning. Your फर्स्ट थिंग जो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखनी है. अगर आपको सर्टिफिकेशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, दैट इज़ ऑल सेकेंडरी. दिस इज द प्राइमरी थिंग विच यू नीड टू फोकस ऑन. इफ यू वांट टू बिकम अ एथिकल हैकर, गो फॉर लर्निंग. अगर साथ में आपको उसके सर्टिफिकेशन मिल रहा है, देन वेल एंड गुड. हेलो रॉकर्स गेमर्स, आई हैव सीन यू बिफोर. Are there any threats to artificial intelligence? Riddhi, that's a great question. Threats to artificial intelligence? Not as of yet, but if you remember, हम लोग ethics में देख रहे थे कि is artificial intelligence good or bad? So there are some people who think it's good and some people who think it's bad. So the only threat to artificial intelligence is, for example, अगर artificial is not intelligence is not ethically correct, so that is the threat to artificial intelligence, right? So iconic क्या था? इट वॉज अ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से, जहाँ पर आपको मेंटोर मिलता है, आपको नोट्स दिए जाते हैं, आपको गाइडेंस मिलती है, आपको कोडिंग भी सिखाई जाती है. So now if you're just taking for a 3-month subscription, right, it will cost you 4,000 rupees. But अगर आप ये magical code use करोगे, you will get a 10% discount. Now what is the use of this 10% discount? So आपको ये मिलेगा 3,600 rupees per month में instead of 4,000 rupees per month, as well as this also reduces to 2,100 rupees per month. Alright, so Prakriti, I hope the codes were easy after you practice them. Threat nahi chamka. So basically, Riddhi, practically there are no threats to AI currently, as I know of. But let me just confirm this for you. So in clarity, basically AI को कोई threats नहीं है in general, and at present there are no threats to AI. AI की वजह से threats है बहुत सारे, right? Okay, so one important announcement. There is one last Prodigy exam. Now, if you do not know what Prodigy is, it is a completely free exam जो mental ability based है. आपका 90 minutes का एक टेस्ट आता है, नॉट 90, 60 minutes का एक टेस्ट आता है. इफ यू गेट an all India rank, you will be getting multiple products from Apple as well as Amazon. So if you think your mental ability is strong, or if you just want to try out a national level exam, I would suggest you to use this code and enroll yourself for it. Now ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. If you're mentally sharp, if you've practiced a lot, you will be able to get a rank. Now there are prizes worth more than 10 crores. क्लासेस 7 to 10 के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10th स्टैंडर्ड के लिए या फिर 9th स्टैंडर्ड के लिए. क्लासेस 7 to 10 can enroll using this code. This is my personal code which unlocks the Prodigy exam for you. Now ये लास्ट एग्जाम जो है होने वाला है February 27th को from 12 to 1 PM. So basically beneath tuple is a collection of objects. In Python, tuple क्या होता है? Tuple can be something like a comma 1 comma 3, right? This is probably a list, but tuple को आप change नहीं कर सकते हो. Tuple is a constant. So Riddhi, answer to your question lies in the chapter known as Artificial Intelligence Ethics. I hope you have studied that.
राइट, जहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीटली वही डिस्कस किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर खतरनाक है तो वाई वी आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन एआई. All right, Rockers Gamers is Harshit and Music Desk is Hardik. All right. So please do not forget to enroll for Prodigy using the code ASK01. I hope to see you there on the leaderboard. All right. Now, what a special class is. If you do not want to pay for Unacademy subscription just as of now, अगर आपको पहले try out करने हैं features, what you can do is use the magic code to unlock free special classes. Now, it is basically like YouTube, but यहाँ पर जो chat है, there is no spamming there. यहाँ पर जो डाउट सेक्शन है आप डायरेक्टली एडुकेटर को डाउट्स पूछ सकते हो. क्लास के बीच में ही आप लाइव पोल अटेम्प्ट कर सकते हो एंड पोल के एंड में देयर इज लीडर बोर्ड एज वेल. So Harshit, I've been continuously taking classes for IT 402, AI 417 and CA 165 on the Unacademy app. I hope to see you there. If you have not attended, आप recorded sessions भी देख सकते हो. All right, bye Prakriti, bye Riddhi. Padhaku Bacha is asking, please tell why IT is so boring. I would like to answer this question, but after a couple of minutes. अगर मैंने कुछ गलत पढ़ा है, if you think I have taught something wrong, and if you want to report it to Unacademy, you can find the link in the bio. ठीक है. Okay, so answering Padaku Bacha's doubt, why is IT so boring? Basically, IT is not actually boring. If you do not understand any subject at first, आपको वो हल्का सा बोरिंग लगने लगता है. अगर आप मैथमेटिक्स ही देखोगे, स्टार्टिंग में अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी, आपको लगेगा कि वो चीज़ बोरिंग है. बट एज एंड व्हेन जैसे जैसे आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं, इट बिकम्स इंटरेस्टिंग टू यू. सो बेसिकली नो सब्जेक्ट इज बोरिंग, यू आर जस्ट नॉट गिविंग इनफ टाइम टू इट. So Princess is saying, sir, I am in 9th, but I want to enroll in this 10th class. Can I enroll for 10th now? So Princess, you can definitely attend the 10th standard sessions. Like Riddhi is attending. आप attend कर सकते हो सारे sessions using the code ASK01 on Unacademy app as well. And you can also subscribe to this channel. जितने भी sessions हैं, you can definitely attend those. ठीक है? So if you have any other doubts, please let me know in the chat. I am IT National. Okay. What is the full form of NSQF? Sahil, if I may ask you. Pratham, for IT 402, there are probably 7 to 8 lectures uploaded, right? जिसमें हम लोगों ने complete syllabus cover किया हुआ है, right? And we have also taken sessions on Unacademy app as well. Yes, Urvi, the session is completed. If you want to see हम लोगों ने session में क्या किया, you can actually rewind since YouTube gives you a facility to do that. National Skills Qualification. All right, Padaku Bacha. All right, so guys, I'll be seeing you in the next session. It was great having you guys. अगर आपको कोई भी doubt है, you can connect with me on Unacademy platform. You can follow me there. You can join my community. I'll be seeing you in the next session.